So Simpson's rules were basically designed and derived for curvilinear shapes. That is, there is a curve and it is linear. So in the case of a ship, supposing this is a top view and this is the underwater view of the ship. This is the underwater ship. So I'm trying to show you two views of the ship, a top view, bird's eye view, and an underwater view, which you can't see from the top, but side se nazar aayega. So these are two in one view. This I'm calling it as the aft perpendicular. This is the forward perpendicular. तो ये जो एरिया है इसको कैलकुलेट, ये कर्व है, कर्वी लीनियर है. So Simpson's rules are used to find out or to calculate areas on a ship. Now, there are two types of areas on board. One is this area. What is this area known as in our shipboard lingo? इस एरिया को मैं क्या बोलूंगा? Water plane area. Correct. Absolutely right. Water plane area. So WPA for short. So using Simpson rule, I can calculate the water plane area. That is the area at the water plane. Area at a particular draft. और ये कर्व है तो इसलिए यूज हो सकता है सिम्पसन रूल. एक एरिया और है जहाज पे. अगर सपोजिंग मेरा ये बल्कहेड है पोर्ट टू स्टारबोर्ड, तो उस एरिया को मैं शिप पे क्या कहता हूं? ट्रांसवर्स. हाँ, डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया. करेक्ट. क्रॉस सेक्शन. हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया. करेक्ट. ट्रांसवर्स एरिया, एब्सोल्युटली राइट. द डायरेक्शन इज ट्रांसवर्स. CSA, cross sectional area, or as you said, transverse area. Transverse is the direction in which the area of the bulkhead is being measured. So it is called as cross sectional area. So ये दो areas हैं हमारे जहाज पे जिस पे हम associated हैं. वाटर प्लेन एरिया, जब हम वाटर प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं, लेंथ इज द डायरेक्शन, फॉरवर्ड टू आफ्ट और आफ्ट टू फॉरवर्ड. एंड जब मैं बल्कहेड की बातें कर रहा हूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बातें हो रही हैं. डायरेक्शन बिकम्स पोर्ट टू स्टारबोर्ड और स्टारबोर्ड टू पोर्ट. Okay. Using Simpson rule, I can then calculate the geometric center of the water plane area. By what better name do I know this as? Center of flotation. Center of Flotation. Correct. Absolutely right. Center of flotation. So, using Simpson rule, I can therefore calculate center of flotation of a ship. And the distance of the center of flotation from the aft perpendicular, what do I know this as?
LCF. LCF. Longitudinal center of flotation. And so therefore I can then find out LCF, longitudinal center of flotation. Okay. Using Simpson rule, I can also calculate underwater volume. अब मैं नीचे चला गया, पानी के नीचे, इस शेप पे. I can also calculate underwater volume. And therefore, I can also calculate GC of the underwater volume. By what better name do I know this as? Center of buoyancy. Correct. COB, center of buoyancy. अब ये इस प्लेन में लाई करेगा, अंडर वाटर वाली प्लेन में, तो ये कहीं और लाई करेगा. सपोजिंग ये इधर लाई करता है, ये अंडर वाटर चला गया, और इसको अगर मैं मेजर करूं हाफ परपेंडिकुलर से, तो मुझे क्या मिलेगा? LCB. 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 LCB, लॉन्जिट्यूडनल सेंटर ऑफ बुओयेंसी. और अगर इसको मैं यहां से मेजर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? KB. KB. ये मुझे KB देगा. So using Simpson rule, I can therefore calculate LCB और KB. फर्क दोनों में खाली ये है कि KB में मेरी रेफरेंस एक्सिस कील है, और LCB में मेरी रेफरेंस एक्सिस हाफ परपेंडिकुलर है. रेफरेंस एक्सिस मेरी बदल रही है, मैं उसको कहां से मेजर कर रहा हूं, दैट इज नोन एज द रेफरेंस एक्सिस. लेकिन अगर मेरी रेफरेंस एक्सिस मैंने बदल दी तो फिर मेरा डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा KB या LCB. Using Simpson rule, I can also calculate the second moment of water plane area. By what better name do I know this term as? Moment of inertia. Correct. Moment of inertia. So definition of moment of inertia. Second moment of water plane area. So using Simpson rule, I can then calculate moment of inertia. And we know moment of inertia is used where? तो BM निकालने में. BM निकालने के लिए. BM और FSM. FSM निकालने में. And therefore FSC, because FSC is IDI by W. Where IDI is your FSM, the numerator is your FSM. So using Simpson rule, I can therefore calculate moment of inertia, which is used आगे जाके, and BM में भी use होता है, I by V. Using Simpson rule, I can also therefore calculate something known as COP, center of pressure. Center of pressure. तो COP में यूज होता है.
सिम्पसन रूल। अब हमारे सिलेबस में फेज 1 में 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 हमारे सिलेबस में है। दिस इज इन फेज 1। 5 एंड 6 हम करेंगे फेज 2 में। ये फेज 2 की बारी है। सो दैट इज हाउ ये सिम्पसन रूल कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे फेज 2 में भी। और यही सिम्पसन रूल हमारे शेयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में भी यूज होगा, तो उसकी एप्लीकेशन उधर भी आएगी फेज 2 में, एसएफ एंड बीएम की कैलकुलेशन में। तो इसलिए इसकी अहमियत है। सर ये सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ प्रेशर अब ये वो मैं फेज 2 में करूंगा भाई, अगर अभी बता दिया तो फिर मैं डेविएट हो जाऊंगा। सेंटर ठीक ऑफ है सर। प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इज बेसिकली जहां पे थ्रस्ट एक्ट करती है, ओके सर। जहां पे जो बल्कहेड की जो थ्रस्ट है वो जहां पे एज्यूम टू एक्ट करती है, तो इसलिए उसको सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। So our area of concentration in phase 1 is going to be 1, 2, 3, 4 up to here, up to the GC of the underwater volume, LCB KB निकालने तक हम फोकस करेंगे उस पर। बट यू टू जस्ट रिमेंबर कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बातें हो रही हैं तो बल्कहेड की बात हो रही होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट बल्कहेड। एंड जब वाटर प्लेन एरिया की बातें हो रही होंगी तो हम लेंथ की बातें कर रहे हैं, देन लेंथ इज ऑफ ग्रेट ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस, लेंथ, लेंथ ऑफ द वेसल। और जब बल्कहेड की बात हो रही होगी तो हाइट ऑफ द बल्कहेड या विड्थ ऑफ द बल्कहेड की बातें हो रही होगी, ये याद रखना। तो इन वाटर प्लेन एरिया लेंथ इज इंपॉर्टेंट, इन बल्कहेड हाइट या विड्थ इज इंपॉर्टेंट ऑफ द बल्कहेड। सर ये कैसे आया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से बल्कहेड की बात, मतलब ये भाई रिलेशन? भाई अगर मैं कोई सपोजिंग ये बल्कहेड है, सपोजिंग दिस इज अ बल्कहेड, तो इस बल्कहेड की कुछ हाइट होगी और इस बल्कहेड की कोई विड्थ भी होगी, यस वो सर। इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए उस वक्त। लेंथ ऑफ द शिप इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। ओके ओके सर, ओके। एंड जब मैं वाटर प्लेन एरिया की बात करूंगा तो बल्कहेड कितने हाइट का है और बल्कहेड की विड्थ क्या है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, या शिप की हाइट, मतलब इसकी जो प्लेन है वो मेरी लेंथ वाली इस इस साइड में जा रही है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। Okay. What Simpson did was he derived a formula. He said कि अगर ये अगर कर्वीलिनियर शेप है तो क्या सिम्पसन ने कहा कि
ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ of the vessel. This is the aft perpendicular. This is the forward perpendicular. So what he said was कि अगर मुझे if I have to calculate the area enclosed by this curve, तो उसने what he said was इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं. उसने इसकी इंटीग्रेशन कर दी एंड मुझे एरिया मिल जाना चाहिए. तो उसको इसने इंटीग्रेट किया एंड देन he derived a formula कि area is equal to K into H into SOP. ये उसने फॉर्मूला डेराइव किया. एरिया इज इक्वल टू K into H into SOP. He derived this formula where he said K is a constant. K is a constant. उसने उसका कांस्टेंट बोला. H is common equal interval. H is common equal interval. So what Simpson said was कि ये लेंथ जो है इसको मैं सेक्शंस में डिवाइड करता हूं in what he called as ordinates. और इनकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल होगी और वो होगी h. So what are these lines? They are the breadths which are measured from port to starboard. ये breadths हैं. तो अगर मैं पोर्ट टू स्टार्बोर्ड ब्रेथ को मेजर कर लूं, इधर ये 0 है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं मेजर करूं, n is the number of breaths n is the number of breaths. So in this diagram, how many breaths do you see? The 7. 7. बिल्कुल ठीक. First one is aft perpendicular पे breath जिसकी वैल्यू 0 है, बट ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7. So this can vary from question to question, case to case. और इन ब्रेथ्स को इसने नाम दे दिया ऑर्डिनेट्स. Sir, why did we count the one on aft perpendicular? बिकॉज वो भी गिनती में आता है. Because it is also an ordinate. It is also an ordinate. तो दिस कैन वेरी. किसी केस में ये 8 होगा, किसी में 9 होगा, किसी में 10 होगा. इट कैन कीप वेरिंग. So supposing I give you length as 100 meters and I now ask you to calculate h.
Then h is given by the formula L divided by n minus 1. So in this case, supposing 100 meter है, it would be 100 divided by 7 minus 1. So 100 divided by 6. So many meters would be the spacing of h, which is a common equal interval. SOP, हाँ जी, 7 minus 1 है सर. 7 minus 1 है. ओके. So h की वैल्यू जो है 100 divided by 6 meters आएगी. जो भी ये वैल्यू बनती है 16.667 meters, यानी कि 16 मीटर के इंटरवल पे मेरे को ब्रेथ मेजर करनी है, जो कि मुझे क्वेश्चन में दी जाएगी. SOP is known as sum of products. SOP is known as sum of products. ये SOP मैं अभी बाद में बताऊंगा. Before SOP, any doubt? Any doubt before SOP? सर ये कांस्टेंट क्या है? ये भी आएगा, अभी आगे जाके आएगा. बेसिकली उसने ये बोला कि ये एक फॉर्मूला डिराइव किया उसने और कहा कि इस फॉर्मूले से अगर मुझे कोई भी कर्व दे दिया जाए तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं. एनी कर्व यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो उसमें क्या कांस्टेंट वैल्यू होगी एंड h इस फॉर्मूले से आएगा L डिवाइडेड बाय n माइनस 1 एंड SOP अभी मैं आगे बताऊंगा. तो अब इस सिनेरियो को अगर मैं अपने जहाज पे ले जाऊं तो कैन यू टेल मी व्हाट इज h ऑन बोर्ड? सर फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम्स पे भी डिपेंड करेगा ना सर. नंबर ऑफ फ्रेम्स पे. हाँ, सो h इज आवर फ्रेम स्पेसिंग यस सर. ऑन बोर्ड. तो h मेरी जहाज की फ्रेम स्पेसिंग है. और बट वो सर 0 से होती है ना सर? हाँ, तो ये तो बेसिकली नहीं, सो ये इसको हम फ्रेम नंबर 0 कहते हैं, इसको हम फ्रेम नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं, राइट? एंड व्हाट इज n? व्हाट इज n ऑन बोर्ड? Number of frames. Correct. Absolutely right. N is your number of frames, 0 included. So what will become your total number of frames? फ्रेम प्लस 1 हो जाएगा ना सर? Correct. टोटल नंबर ऑफ फ्रेम प्लस 1. तो वही आप बन गया ना 1 2 3 4 5 6 7. So n is your 7, which is your number of frames.